शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में अशाया न्यूज़ स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस वक्त इस अशाये में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। वज़ीर ख़जाना असद उमर भी यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद हैं। सऊदी वली अहद का ये अहम दौरा, सऊदी वफ़द में शामिल मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं आप इस्लामाबाद से। वज़ीर आज़म हाउस के मुख्तलिफ MOU जो थे उन पर दस्तखत भी हो चुके हैं और साथ ही साथ अभी इशाए का भी एहतमाम किया गया है। सऊदी वली अहद के एजाज़ में तमाम ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वफाकी काबीना के अरकान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस वक्त शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अहम मुआहदा, अहम नौयत का मुआहदा है और इस मुआहदे को तमाम ही जो तजिया निकार हैं वो भी एक बड़ी अच्छी नज़र से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत ही इस्तेहकाम लाएंगे। ये जो मुआहदे हैं, ये जो दौरा है सऊदी वली अहद का जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, तारीखी दौरे पर वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और अभी सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में इशारा दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान बराजमान हैं सऊदी वली अहद के साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी अभी पहुँचे हैं यहाँ पर शिरकत करने के लिए। वफाकी वज़रा की पूरी टीम भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ जो MOUs थे वो भी साइन हो चुके हैं, उन पर दस्तखत हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद के निगरानी में ये तमाम दस्तखत हुए हैं। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी और खुशाइन तब्दीली का पेश खैमा साबित होगा, ऐसा कहना था मुल्क की सियासतदानों का। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा भी इस दौरे से काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई दिए हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद सलमान के दौरे को हर सतह पर ही सराहा जा रहा है। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी ने भी इस दौरे को इक़्तिसादी और सियासी एतबार से अहम करार दिया। उनका यह कहना था कि यमन के मामले में ताल्लुकात ख़राब हुए थे, लेकिन अब यह लग रहा है कि बात बेहतरी की तरफ चल निकली है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा जो है वो हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सऊदी सरमायाकारी से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के इस दौरा पाकिस्तान का हर सतह पर ही खैर मकदम किया जा रहा है। सोशल मीडिया की भी अगर बात की जाए तो सारिफीन ने शुक्रिया भी अदा किया कि मुश्किल हालात में सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान का दौरा किया और जो मुआहदे होने जा रहे हैं उस वजह से पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम भी मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस इशाए की तकरीब में मौजूद हैं, अभी वो पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को आप देख रहे हैं न्यूज़ की स्क्रीन पर। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ वो बराजमान है। वज़ीर आज़म खुद गाड़ी ड्राइव करके शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर आज़म हाउस में लाए। शाही मेहमान का तैयारा जैसे ही पाकिस्तान में दाखिल हुआ, पाक फ़ज़ाई के F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने उसे हसार में ले लिया और अभी सऊदी वली अहद के एजाज़ में इशाए की तकरीब जारी है। Ministers, honorable guests, I take again the opportunity of welcoming you to Pakistan. Again, I repeat that for Pakistanis, this is a great day. Not only is Saudi Arabia, people of Saudi Arabia living in our hearts because of Makkah and Medina, but also because Saudi Arabia has always been a friend for Pakistan. Saudi Arabia has been a friend when Pakistan has needed friends. So Saudi Arabia has always been a friend in need, which is why we value you so much. Highness, I want to say that what I said before, that in my 6 months of being Prime Minister, the greatest moment for me was when I went to Makkah and Medina, and because of you, I was allowed to go inside the Kaaba, and then in Roza Rasul in Medina, I was allowed to go inside. They remain the two most, what can I say, the best moments for me since I've been the Prime Minister. So I especially, personally, want to thank you for that. I want to thank you for the way you helped us when we were in bad situation. And I'm very happy that you came here because we have just signed these MOUs. And Pakistan and Saudi Arabia are now taking this relationship to a level which we never had before. A relationship where it will now be
investment between the two countries which will mutually benefit from it. A relationship where we will be investing in minerals, where we will, I was going to say about tourism, but just when we were driving in the car, the passion with which you spoke about tourism in Saudi Arabia made me a bit worried, because I thought Pakistan had this tourism potential. But the things you told me about Saudi Arabia, well, and the amount of tourism, I'd never realized that Saudi Arabia had 80 million tourists. We're going to take it to 100 million tourists. So Pakistan is still a long way to go, but we do feel very proud. I'm very passionate about the potential in this country. Pakistan's tourism has not really grown at all. That we have some of the most beautiful mountainous tourism anywhere in the world. I know in other ways Saudi Arabia will be ahead of us, but in mountain tourism, Pakistan is ahead of Saudi Arabia. The MOUs we've signed on petrochemicals, minerals, agriculture is one area, food processing is another area. But you know, we have CPAC, we have links with China, we have very close now connectivity with probably what is the biggest market in the world, which is China. So we welcome Saudi Arabia to participate with us. It's an exciting future where we have Saudi Arabia participating in what is going to be, in the next 10 years, probably the biggest country with the biggest GDP. Again, I want to thank you, Your Highness. I wish you could have stayed longer, but I can tell you that if we did not have security concerns, and we worry about your security more than my security, if it wasn't for that, you would have seen thousands and thousands of people on the streets welcoming you. So welcome again. Thank you, Prime Minister. And we are very glad to be today in Pakistan, a dear country to all Saudis, from His Majesty and the youngest Saudi in Saudi Arabia. We've been a brotherly country and friendly country to Pakistan, and we've worked together in tough and good times, and we will continue the same thing, especially that Pakistan facing really great future today with a great leadership. Last year, 2018, Pakistan GDP grew by 5%. So we believe that Pakistan is going to be a very, very important country in the coming future. And we want to be sure that we are part of that. So we are waiting for that kind of leadership to partner with and to build a lot of things together. Today we signed MOUs. We believe the amount of that kind of investment is $20 billion US. It's big for phase one. And definitely it's gonna grow every month, every year in bigger numbers, and it will be beneficial for both countries. We've talked about tourism, and Mr. Prime Minister ruled my plan, because we plan to announce that after a few days, or maybe 10 days from today, and we are not planning to announce that we're going to target 100 million tourists. So usually we do some trick to announce, you know, a little number and to achieve more. But now we have to be committed to 100 million tourists. I cannot promise that in 2030, but we will reach that one day. Today we have 80 million tourists, and we believe we're going to succeed 50 million tourists super easily in the next coming 15 years, 20 years, and 100 million tourists, it's very reasonable target for Saudi Arabia. We have a lot of heritage, we have amazing nature, we have great people, we have infrastructure, we have stability, we have everything. We have even the financing and the money to invest in that area. So we will work with Pakistan in all of these things, economically, politically, and security.
and we will be sure that we are creating amazing, great future for Saudi Arabia and Pakistan and for our region. We believe in our region, that's why we're investing in it, and we believe that we will gonna have one day great Middle East surrounded by Pakistan from the east side. This is my first trip east since I became Crown Prince, and the first country is Pakistan. Thank you. Two things I just want to mention. Number one, that we have during Hajj, we have people going to Saudi Arabia, and we would just like to request you, for the sake of the Hajis, that we have immigration done in Pakistan in the three big cities. Reason being that it's easier for Saudi Arabia as well as it's easier for us, and especially for Hajis who save all their money for years to go for Hajj, and some of them are old, so we would just request you that, number one, that to allow them to do their immigration in Pakistan. And secondly, I just wanted to mention that Pakistan labor, mostly labor, they are white-collar workers there too. And I just want to say, Your Highness, that these are people very close to my heart. They are very special people who leave their families, who take all the trouble just to go away to earn a livelihood for their families. These are mostly people who don't see their families for a year, 6 months. And so for us, they are very special people. And we would just request you that, it is something which will please the Almighty if we can just treat them. There are some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they have poor people who have left their families behind. So just a request that these are very special people for us, this labor which goes abroad for working. And imagine leaving their family and children behind who work hard, send their money back, and we would, a special request from them that, please, sometimes they face hardships, and we would like you to look upon them as your own people. They basically, we feel that this close affinity to Saudi Arabia, we feel that your people are brothers, and we would just like you to have that same feeling for them. Thank you very much. Mr. Prime Minister, just I want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. Thank you. पाकिस्तान के लिए आज एक अजीम दिन है। हमेशा ज़रूरत के वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में इशाए की तकरीब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मदद करने पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सयाहत के शोबे में सऊदी अरब हमसे बहुत आगे है, लेकिन माउंटेन टूरिज़म में हम सऊदी अरब से आगे होंगे। हमेशा ज़रूरत के वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए मदद की है। इमरान खान का यह कहना था कि मुझे काबे के अंदर जाने की इजाज़त दी गई और मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजियों के हवाले से उन्होंने कहा कि मज़ीद उन्हें सहूलतें फराहम की जाएँ, इमिग्रेशन का जो अमल है वो पाकिस्तान से ही किया जाए, और सऊदी अरब में जो लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो लेबर तबका है, उस हवाले से वज़ीर आज़म ने अपना कंसर्न भी शो किया कि अपने ख़ानदानों को सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं और वो ये चाहते हैं कि वो लोग जो वहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और वो लोग जो इस वक्त जेलों में कैद हैं, उस हवाले से सऊदी हुकूमत उनके मामलात पर भी एक बार नज़रसानी करे, जिस पर सऊदी वली अहद ने कहा कि हम पाकिस्तान को ना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान आने वाले दिनों में एक अहम मुल्क है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ MOU भी साइन किए गए हैं और सऊदी वली अहद ने यह भी कहा कि 100 मिलियन टूरिस्ट प्रोग्राम के हवाले से चंद दिनों में फैसला किया जाएगा। दोनों ही हुकूमतों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान जब कार ड्राइव करके सऊदी वली अहद को वज़ीर आज़म हाउस लेकर जा रहे थे, तब उनकी टूरिस्ट प्रोग्राम के हवाले से
गाड़ी में ही बात हुई है और उनका ये कहना था कि 10 दिन तक या एक हफ्ते तक इस पर भी एक जामे प्लान बनाया जाएगा और उस पर भी एक फैसला लिया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आकर बेहद खुशी हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शायद की इस जो तकरीब है इससे बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा अजीज़ है और आपके लिए तमाम तर इंतजामात भी किए गए हैं और पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरब के साथ खड़ा रहा है और हमेशा से ही सऊदी अरब के साथ रहेगा। हमारे जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं, मज़ीद मजबूत हो रहे हैं और ये दोस्ती हम चाहते हैं कि इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। हमेशा ज़रूरत के वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की, इसलिए पाकिस्तान सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी देता है। इमरान खान ने ये कहा कि पाकिस्तान की मदद करने पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस हवाले से आपको मज़ीद भी बताएंगे, अभी शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है लेज को हम सबका फेवरेट बनाया, शुक्रिया। लेज, लाइफ नीड्स फ्लेवर।